हेलो स्टूडेंट्स, चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज हम देखने जा रहे हैं सोशल स्टडीज़ का क्लास 8 का 4th चैप्टर की एक्सरसाइजेज वाला पार्ट। तो 4th चैप्टर ट्राइबल्स, डिकूज एंड द विजन ऑफ अ गोल्डन एज, इसको हम देखेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स को हम देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है जो A British described the tribal people as wild and savage. Wild and savage को हमें फिल करना है। B. The method of sowing seed in Zoom cultivation is known as broadcasting or scattering. C. The tribal chiefs got land title in central India under the British land settlement. D. Tribals went to work in the tea plantations of Assam and the coal mines in Bihar. Second question है, state whether true or false. Zoom cultivation, plow the land and sow the seed. ये false है. Cocoons were bought from the Santhals and sold by the traders at 5 times the purchase price. True है ये. Birsa urged his followers to purify themselves, give up drinking liquor, and stop believing in witchcraft and sorcery. ये सत्य है, ट्रू है ये. The British wanted to preserve the tribal way of life. ये false है. थर्ड क्वेश्चन को हम देख लें, उसका आंसर कंप्लीट करें. What problem did shifting cultivation face under British rule? तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन आप जानते हैं, जिसको जूम कल्टीवेशन भी कहते हैं. इसमें ब्रिटिश रूल के दौरान क्या प्रॉब्लम थी? व्हाट प्रॉब्लम्स, क्या समस्याएं थी? आंसर करना है. फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिक रीजन द ब्रिटिश गवर्नमेंट tried settling the Zoom or shifting cultivators. However, settled plow cultivation did not prove to be helpful to these Zoom cultivators. They often suffered because their field did not produce good yield. The new forest laws also affected the life of the shifting cultivators. Shifting or Zoom cultivation is usually done on small patches of forest land. Under the forest law, British extended their control over all forest and declared the forest were state property. Thus, the Zoom cultivators were prevented from practicing Zoom cultivation freely. Many were forced to move other areas in search of work and livelihood. Fourth question is, how did the power of tribal chiefs change under colonial rule? तो इसमें हमें बताना है कि ट्राइबल चीफ्स जो होते थे, ट्राइबल मुखिया, ट्राइबल के समूह के जो मुखिया होते थे, उनके पावर्स कैसे चेंज हो गए, क्या क्या कमी आ गई उनमें कॉलोनियल रूल के दौरान, यानी अंग्रेजों के शासनकाल में. तो इसको हमें देखना है, लिखना है. अंडर द कॉलोनियल रूल द फंक्शंस
and powers of tribal chiefs changed considerably. Before the arrival of British, these tribal chiefs enjoyed a certain amount of economic power and used to administer and control their territories, which were not so now. They were allowed to keep their land title over a cluster of village and rent out lands. In this process, they lost much of their administrative power and were forced to follow laws made by British officials. They also had to pay tribute to British and discipline the tribal groups on behalf of British. Hence, under the colonial rule, they lost their authority they had earlier enjoyed among their people and were unable to fulfill their traditional functions. What account for the anger of tribal against the coups? जैसा कि आप जानते हैं दिकूज कहा गया है जो जंगलों में जो बाहर से जाने वाले लोग थे उनको ये लोग दिकूज कहा करते थे जो ट्राइबल्स ग्रुप थे तो उनके खिलाफ उनके विरुद्ध एंगर यानी उनकी गुस्सा क्यों लोगों में बढ़ता गया अकाउंट्स क्यों बढ़ता गया क्यों जमा होता गया गुस्सा तो हम इसका आंसर करेंगे ये आंसर इसमें कई पॉइंट्स दिए गए हैं आप 2 या 3 पॉइंट्स भी लिख सकते हैं इनमें से अगर एग्ज़ाम में शॉर्ट आंसर में पूछा जाए तो आप 2 पॉइंट्स भी लिख सकते हैं और लॉन्ग आंसर में आप 4 पॉइंट्स भी लिख सकते हैं तो हम देख लें मेन पॉइंट्स क्या हैं हम सभी पॉइंट्स को देख सकते हैं आप अपने तैयारी के हिसाब से इनको देख लें The word Dikus means outsider or who come from outside like moneylenders, traders, jamindars, contractors, British etc. There are a number of reasons for anger of the tribals against the Dikus. इसका पहला आंसर हम लिखें पहला हम पॉइंट लिखें The tribals practiced shifting cultivation, but the British forced them to follow settled agriculture and also introduced land settlement. दूसरा हम लिखें Traders and moneylenders were coming into the forest, waiting to buy forest produce a very cheap rate. Learning them to take cash loan at high interest etc. The innocent and poor people initially fell in the trap of these money lenders and traders and remained indebted throughout their lives. So the tribal considered the traders, moneylenders as evil outsiders. एक और हम लिख लें 2 लिखें हम और आप अपने अपने तैयारी को देखते हुए दोनों तरह से इस आंसर को तैयार कर लें लॉन्ग आंसर के हिसाब से और शॉर्ट आंसर शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो उस तरह से भी Under British rule, the tribal chiefs lost their authority they had enjoyed earlier. All among us, their people were unable to fulfill
their traditional functions. Rather, they had to pay tribute to the British. By the introduction of forest law, the British evacuated them from their own land. As a result, they became homeless and went in search of work and livelihood. इसके बाद हम देखें, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, What was Birsa's vision of a golden age? Why do you think such a vision appealed to people of the region? तो बिरसा का गोल्डन एज का जो स्वर्णिम काल का जो विजन था या दर्शन था, क्या चाहती थी वो गोल्डन एज, उनकी गोल्डन एज यानी स्वर्णिम काल क्या होगा ट्राइबल्स के लिए, बिरसा मुंडा की क्या कल्पना थी और किस तरह से उनके इस विज़न ने लोगों को अपील किया यानी लोगों को आकर्षित किया। आंसर करना है हमें। बिरसा talked about a golden age, a Satyug, an age of truth in which, like in the past, the tribal people would live a good life, construct embankments, tap natural springs, plant trees and orchid, and practice cultivation to earn their living. He talked of an age in which the tribals would not kill one another and would live an honest life. His golden age consisted of a reformed tribal society in which there was no place for vices like liquor, uncleanness, witchcrafts, and sorcery, and outside forces like the missionaries, landlords, moneylenders, traders, and the Europeans. This vision was appealing to the tribal people as all the wicked and outside forces that Birsa talked about were indeed though of by everyone as the root causes of their misery and suffering. इस तरह से इस चैप्टर को आपको तैयार करना है आंसर के लिए एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो जो क्वेश्चन आपको बड़े लगते हैं उनको आप तैयार पूरा करें और जिस तरह से क्वेश्चन किया जाए शॉर्ट आंसर के लिए या लॉन्ग आंसर के लिए, तो वैसा अपना आंसर इसके लिए तैयार कर लें। कंप्लीट हो चुका है ये। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, आनंदित होंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।